agree that terrorism is the biggest threat to peace, security and progress of India? Yes. Don't you agree that Pakistan is the main source of arms, ammunition and training of terrorist group operating in India? Yes. Don't you agree that it's only a matter of time before the entire nation falls prey to this cancer called terrorism? Yes. Then why, my dear friends, why we are not able to give strong and bold response to Pakistan the way US had given to Afghanistan post 9/11 attacks? Pakistan has fought 4 major wars over Kashmir. They very well knew that they cannot win a conventional war against India. That is the reason they have chosen proxy war, by sending terrorist groups into Kashmir and over entire nation. These terrorist groups are bombing and killing innocent Indians across all the nation. No civilized nation can allow this kind of barbaric inhumanity to be sponsored by a neighboring country like Pakistan is doing. And friends, from our side, we are not even able to punish those bloody terrorists like Kasab and Afzal Guru, whom we have captured like 5 years down the line. So, are you waiting for another plane hijack to happen to set free these terrorists like we did in Kandahar? Till when we keep on losing our heroes like Major Unni Krishnan and Hemant Karkare? Don't you think it's time we should invade POK, destroy the terrorist camp and teach them a lesson of their life? Yes. To resolve this issue, we have to work multifold. Our police and intelligence agencies have to work together in coordination. Like US and Israel, we have to beef up our internal security, as no terrorist attack is ever possible without internal assistance. Don't you agree? Yes. Thank you. आप बैठ अच्छा ओके Ladies and gentlemen, don't you agree that some species eat their own some creatures eat their own species like snakes, fishes? Yes. Don't you agree that man is the biggest enemy of the man? Yes. Don't you agree that women is the most beautiful creation in this world? Yes. Then why, my dear friends, we are killing our own girl child? Why? Mothers are killing their own shadows. Parents are killing their own girls, own daughters. Why? There are only 867 women after 1,000 women. So, don't you think we should not spoil our female? Yes. Then why? Don't you agree that we should save our girl child? Yes. So please save the girl child, give them birth. She is the only one who takes care of your feelings. Thank you very much. Good. Ladies and gentlemen, don't you agree that our country got freedom 6 decades back? Yes. Don't you agree that our written constitution is one of the best constitution in the world? Yes. Don't you agree that India is one of the fastest growing economy in the world? Yes. Then why, my dear friends, why this common man is facing this problem of inflation? Why we feel no satisfaction and no enthusiasm when we receive the increment letters? Because we know that this 8% hike would be swallowed by the rising inflation. My dear friends, the inflation data in May 2012 was 99.85% inflation, that is around 10%. The research conducted by McKinsey and Company says that in consumer food prices are climbing like more than 35%. My dear friends, the recent petrol hike of more than rupees 7.5 has triggered a fresh protest across the country, and that shows that our government has no political will to control this inflation, because it is going to benefit only the traders, black marketers and the big corporates. Our concern is that common man is not going to tolerate this slow poison. I am telling you that if the rate goes on increasing, common man will resort to violence. Don't you agree that this is the time when our government should take some strong economical measures to control inflation? Yes. My dear friends, we have to understand what is inflation. When there is less goods in market and more demand, that is more money. Our government should take
basically two measures. One, monetary measures, one, fiscal measures. Monetary measures, increasing the bank rate policy and increasing the CRR. And in the fiscal measures, ban on the export of the edible items and reduce the import duty on the goods. Start. Your time is started. Ladies and gentlemen, don't you agree I become hell? Yes. Don't you agree the common man is suffering? Yes. Yes. Don't you agree for buying even a small thing we have to think so much? Yes. And why, my dear friend, why we don't fight against corruption? Yes. Are you sleeping? The problem is that it is a dirty politics. Everybody wants to make money, but nobody want to make welfare of people. It is our responsibility to remove this system and it is in our hand to remove this corruption. Don't you agree? Don't you agree? We the people of India and remove this corruption? Yes. Yes. Don't you agree? We the people of India and choose a right person for our country? Yes. The Anna Hazare had started a fight against corruption, and we the people of India can take part in it. As the time passes, this corruption can be removed. It is all due to us. Don't you agree? Yes. Yes. Good one. Very good. मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो तो उसका हम इलाज करवाते हैं? जी हाँ. क्या आप मानते हैं कि हमें अपने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए रोजाना हजारों बुराइयों से लड़ना होता है? जी हाँ. हाँ जी हाँ. क्या आप मानते हैं कि अगर हमारे घर में गंदगी हो तो उसे खुद हमें साफ करना होता है? जी हाँ. तो क्यों, आखिर क्यों 1947 से लेकर अब तक कश्मीर देश का सबसे बड़ा मुद्दा है? आखिर क्यों आज 65 सालों के बाद भी जब हिंदुस्तान तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति होने के बाद भी कश्मीर के नाम पर होने वाले आतंकवाद से हम उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं? 1947 से लेकर अब तक करोड़ों अरबों रुपए हमारी सरकार सुरक्षा के नाम पे खर्च कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लाख हिंदुस्तानी आतंकवाद के से हुए हमलों का शिकार हो रहे हैं। आतंकवाद के नाम पर कई राजनीतिक दल करोड़ों अरबों रुपए का गबन कर रहे हैं, जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था चरमरा उठी है। क्यों हम इस दर्द को सहन कर रहे हैं पिछले 65 सालों से? क्यों हम हमारे देश में ही अपने भविष्य सुरक्षित नहीं हो? क्यों हमारा भविष्य हमारे देश में सुरक्षित नहीं है? क्यों 65 सालों से हम इस दर्द को सहन कर रहे हैं, इस गंदगी को मिटा नहीं पा रहे हैं? और इसका एक ही समाधान है। अब वो समय आ गया है कि हम इस आवाम को जगाएं, उनको बताएं। Ladies and gentlemen, don't you agree India is progressing by leaps and bounds in the matter of economy? Yes. Don't you agree? The most distressing feature of our social system is that we have at present there is a disparity in lifestyle and incomes. Yes. Yes. Don't you agree? Government has planned and implemented so many programs for weaker section, but the benefit of these programs are yet to bear fruits. Yes. Yes. Then why, my dear friends, more than
37% of India's population still lives below the poverty line. Poverty is one of the toughest problems that India is facing today. Although Indian economy has grown steadily over the last 2 decades, but the distribution of resources and wealth is uneven in India. This creates different poverty ratio for different states. For instance, states like Punjab and Delhi have lower poverty ratio, but on the other hand, almost half of the population in states like Bihar and Odisha, India, the population living below the poverty line. After 64 years of independence, our 1/4 of nation population is still lives below the poverty line and earns less than the government specified poverty threshold of 32 rupees per day. In spite of so many progress that India has made during the years, the monster of poverty has not been eliminated. Shall we have a big round of applause? Keep on पकड़ेगा और मैं आपको कहना चाहता हूँ अंकुर speech was wonderful, lovely speech, good body language, fluent, meaningful, बहुत अच्छी थी speech. 2 जगहों पे आपने काम करना है. एक, आपकी स्पीच वाज शॉर्ट ऑफ 20 सेकंड. नंबर 2, आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चन से ही पता लग गया टॉपिक क्या है. टेररिज्म. जबकि आपको पता लगा कि फर्स्ट 3 क्वेश्चन से इंक्लिंग भी नहीं होनी चाहिए कि आप किस टॉपिक बोलने वाले. 4 क्वेश्चन होने चाहिए. तब पहले टेररिज्म था, सेकंड में आर्म्स एंड पाकिस्तान, थर्ड वाज टेररिज्म, एंड फोर्थ देन यू सेड व्हाई डोंट वी अटैक पाकिस्तान. ओके, आपने कहा सॉल्यूशन में आपने 2-3 दिए हैं. एक तो व्हाई डोंट वी अटैक पाकिस्तान, एंड सेकंड आपने कहा कि पुलिस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. आपका सॉल्यूशन भी एक होना चाहिए. अदरवाइज टेक्निकली देखा जाए तो स्पीच गलत है. अदरवाइज अगर आप देखें बाकी आपकी बॉडी लैंग्वेज, फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग वाज इम्पैक्टेबल. गुड वन. पूजा ब्यूटीफुल. उम्स एंड नाम्स बहुत ज्यादा थे. प्रैक्टिस थी नहीं, स्पीच ऐसी होगी. 60 सेकंड की स्पीच थी, सिर्फ अच्छी थी नहीं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी. जो भी प्रैक्टिस करोगे हमेशा तभी इंसान बनता है. अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो 2 ही तरीके हैं, प्रिपेयर्ड स्पीच एंड इम्प्रॉम्प्टू स्पीच. इम्प्रॉम्प्टू आपको 1-to-1 करने में काम आती है, इम्प्रॉम्प्टू आपको सिर्फ पे काम आती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आपकी प्रैक्टिस से होती है. और आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी वीकर है तो आपको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है. हाँ जी, शोएब, लाउड एंड क्लियर, एंथुसियास्टिक, गुड, एंड एवरीथिंग वाज ओके. ओनली 2 बातें हैं. आपने 2 सोल्यूशन दिए हैं. ओके, 2 सोल्यूशन आप एक सोल्यूशन दे रहे हैं. द सेम मिस्टेक यू डिड. एंड सेकंड वाज यू कुड नॉट कंप्लीट इन टाइम. यू हैव टू कंप्लीट इन टाइम. अमरिंदर, आपकी कम्युनिकेशन देखते हुए जो आपने बोला है, गुड बात. बड़ी. मोहित, हिंदी की जरूरत क्या थी? अंग्रेजी में बोलो, अच्छा लगता है. इतना चामाजा इंसान है, इतना स्मार्ट सा बंदा है. फॉर्मलिंग बहुत थी, अपने आप को इंप्रूव करो. हाँ, थोड़ी सी मेहनत करो. आप अनुरोध, आपको भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है. और एकदम से स्ट्रेट, एकदम से ऐसे खड़े होकर बिना किसी चेहरे के, बिना इधर उधर देखे हुए, आई कांटेक्ट किए बिना ऐसे खड़े होना बहुत अजीब सा लगता है. थोड़ा सा मूवमेंट रखो, थोड़ा सा इधर देखो, चेहरे पे एक्सप्रेशन होने चाहिए, थोड़ी सी वॉइस मॉड्यूलेशन होनी चाहिए, तो मजा आएगा. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. लेट्स सेलिब्रेट.